Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is a very important video for all the DU aspirants because there's a good news that university is going to announce the merit list for 6th cutoff also. So related to that, one press release is there on the university website. So we are going to discuss a very important thing related to 6th cutoff. Like many of you must be waiting for this and you must be feeling very happy that you have not got admission in the university in previous cutoff, so you were waiting for this cutoff and now it is there. But there is one thing that you should know if you want to take admission in 6th cutoff. So let us see, first of all let us see the circular, then I will tell you what is that thing that will not make you eligible for 6th cutoff. So first of all, this is the circular. Here you can see that all the colleges of the university will display their merit list for 6th cutoff by Monday 30th of November. And the details of the minimum cutoff percentage of marks, 6th admission list at which admission to various courses have been offered by different colleges. That is given in the enclosed charts. So you can check that enclosed chart in the means on the website of the university, and all the eligible candidates who meet the requirements notified in the 6th admission cut-off list are further advised to complete their admission formalities. So now the question comes, who are the eligible candidates? So you must be thinking ki whatever will be the criteria for merit list in the 6th cut-off, so you will be eligible. Means generally what happens that suppose a college has released its cutoff for a course that is suppose 87%. So generally what is the rule that if you have scored like 87% or more than that, then you are eligible. But actually what you have to see that suppose you are now in one college in 6th cutoff the cutoff is 87%, but you have got suppose 91% and you were eligible in the 5th cutoff, but you didn't take admission in the 5th cutoff, or you took admission and you withdrew from it, so now you will not be eligible. सो लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग इन हिंदी ऑल्सो कि अगर आपने सपोज 87% कट ऑफ जा रही है एक कॉलेज की अभी 6th कट ऑफ में, और 5th कट ऑफ में आपके मार्क्स इतने थे कि आप एलिजिबल थे उस कॉलेज के लिए और आपने एडमिशन नहीं लिया, और अब आप सोचें कि अब हम 5th 6th कट ऑफ में एडमिशन ले लें तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो अब उसके लिए आपको कहे कि आपको जाकर वेबसाइट पर उस कॉलेज की कट ऑफ, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको उस कॉलेज की 5th कट ऑफ के भी मार्क्स को चेक करना है कि अगर सपोज वहाँ पर 5th कट ऑफ में 90% था या 90% था और आपके 91% थे, बट आपने एडमिशन नहीं लिया, तो अब अगर उसका 6th कट ऑफ सपोज फॉर एग्जांपल 87 जा रहा है, तो उसकी अब सिर्फ 87 to 90 के बीच वाले बच्चे ही एलिजिबल हैं उस कॉलेज में, उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आप 6th कट ऑफ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस कॉलेज की 5th कट ऑफ भी चेक करनी है, और 6th और 5th के बीच में जो मार्क्स हैं वो उन्हीं मार्क्स वाले बच्चे ही एलिजिबल हैं उस कट ऑफ में एडमिशन लेने के लिए. उससे ज़्यादा वाले भी नहीं हैं और उससे कम वाले भी नहीं हैं. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप उसमें सपोज आपके मार्क्स उससे कम है या कम वाले तो ऑब्वियसली नहीं अप्लाई करेंगे, बट जिनके ज़्यादा हैं वो अप्लाई कर देंगे तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो उनकी वो सीट वेस्ट हो जाएगी. तो इट्स बेटर. And one more thing I want to tell you here, hopefully 7th cutoff will also come. So let's hope for the best. So subscribe to Kingdom of Learning if you haven't yet, and share this video with others also, and like the video also. Thank you.